Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. First, we'll start with the update of technical and derivative. In yesterday's session, Nifty has witnessed a profit booking and closed the index towards its day low at 18,200 marks. However, for the upcoming session, 18,000 and 17,800 might act as a crucial support area. On the daily time frame, bearish engulfing candlestick chart pattern is formed on the index, and a follow-through candle may drag Nifty further to the downside. We would recommend buy on decline to enter for a stock-specific long trade near its support area. In Bank Nifty, the Bank Nifty has lost its momentum as soon as it's reached 43,000 mark. In a yesterday's session. On a daily time frame, Bank Nifty after 70 trading session has closed below 43,000 levels. So for the upcoming trading session, 43,000 level may act as a resistance area. And we have maintained our view on a Bank Nifty closing below 43,000 levels may retest its 50 SMA level, which is placed at 42,025 levels. Overall, for both the index, we maintain a buy on decline strategy near its support area. On the derivative front, Nifty futures saw a short build-up with increase in OI by 2.27%, which was an addition by 2.85 lakh shares. The PCR decreased from 1.01 to 0.70 levels. The major additions were seen at 18,500 call options by 22.26 million shares and 18,300 call options by 10.51 million shares. On the put front, options 18,000 put by 83.88 million shares and 18,200 put by 57.76 million shares. Bank Nifty witnessed long unwinding to the tune of minus 3.39% decrease in open interest, which was a reduction of 1.03 lakh shares. The PCR decreased from 0.9 to 0.50 level. The major additions were seen at 42,500 put option by 19.10 million shares and 43 call option by 29.9 million shares, 95 million shares. The top three long build-ups are Torrent Pharma, Ipcale, and Cipla, and the top three short build-ups are MFSL, LIC Housing Finance, and Dixon. In yesterday's session, FI net position stands at minus 7433 contracts and long ratio at 47.62%. Lastly, stock likely to trade positive for upcoming trading sessions are Divi's Lab and Sun Pharma. Thank you, everyone. Handing over. Thank you, Vikas. Good morning, team. So, few updates from my side, starting with Bandhan Bank. So, the private sector lender has received binding bid of 801 crore from Asset Reconstruction Company on security receipt consideration basis for its return of portfolio with outstanding amount of 8,897 crores. The bank said it would go for bidding as per Swiss challenge method. The bank has already received approval of the board members for the transfer of group loan and SBL return of portfolio to Asset Reconstruction Company. On Adani Enterprises, Adani Solar, the photovoltaic manufacturing and research arm of Adani Group, has launched large-size monocrystalline silicon anode at its Mundra facility. It will drive indigenization to produce renewable electricity from silicon-based PV modules with efficiencies ranging from 21% to 24%. On Starlog Enterprises, the company has completed the sale of 29.6% stake in its subsidiary India Ports and Logistics for 16.5 crores. The Bellore Logistic India is the buyer for the said stake. With this, the shareholding of the company in India Ports and Logistics is nil, and this India Ports and Logistics has ceased to be an associated of Starport Logistics. On JB Chemicals Pharmaceuticals, the private equity firm KKR-based JB Chemicals has completed acquisition of Brazil franchisee from Glenmark Pharmaceuticals. Last week, as a result, it had agreed to acquire
Glenmark's cardiac brand Razel in India and Nepal for 314 crores. On Bharat Forge, the company has commenced supply of forging utilizing green steel manufactured and supplied by Sarloa Advanced Materials, a part of Kalyani Group. This is in line with the company's commitment to reduce the carbon footprint. On Avalon Synthetics, the company has received the certificate of registration as non-banking financial institution without accepting public deposit from Reserve Bank of India. With this, it is in the process of filing necessary application to BSE for effecting change of name from Avalon Synthetics to Avalon Financials. That could be taken as positive by the street and could be, the stock may react positively. On Quality Pharmaceuticals, the company has received approval from Brazil's National Health Surveillance Agency for its injectable formulations manufacturing unit at Amritsar and oncology injectable unit at Himachal Pradesh. The approval allows company to market its products in Brazilian pharmaceutical market. A big positive for Quality Pharmaceuticals. On Reliance Industries, Reliance Retail Ventures Limited, a subsidiary of Reliance Industries Limited, has signed definitive agreements to acquire 100% equity stake in Metro Cash and Carry India Private Limited for a total cash consideration at rupees 2,850 crores, subject to the closing adjustments. On Borosil, the trial production of opal ware glass for the additional capacity of 42 tons per day has begun at the company Jaipur on December 20, 2022. On multiplexes, Inox Ledger has added 2 multiplexes. In addition, the Inox CEO has said that merger of Inox PVR is on track. Further, Avatar has made 129 crore in first week. This coupled with Drishyam making 200 crores and Circus advance booking at 28,000 tickets indicate the strong Q3 for the multiplexes in general. Hence, we remain positive on both Inox and PVR. So India has put the anti-dumping duty on the stainless seamless pipes imports from China for next 5 years. So this will benefit the companies like Maharashtra Seamless. And lastly on Lemon Tree, Lemon Tree has announced the opening of a new hotel in Mukteshwar, Uttarakhand under the company's brand Lemon Tree Hotel Mukteshwar. This hotel features 41 well-appointed rooms and suites, a multi-cuisine restaurant, and the rest of the facilities. The hotel is managed by the Carnation Hotels Private Limited, a wholly owned subsidiary, and the hotel management arm of Lemon Tree Hotels Limited. We have buy rating on the stock with a target price of 104. So that's it from my side. Now I request Brijesh to take it from here. Thank you and over to you, Brijesh. Thank you, madam. So we'll have a few more news updates from my end. So there is a news from the Ahmedabad-based Torrent Group has won the race to acquire the Reliance Capital after making an offer of rupees 8,640 crores for the company in the auction which was held on Wednesday. Next, the public sector bank. The public sector bank is all set to raise funds by selling the additional Tier 1 81 bonds this week as they keep capital ready to participate in the emerging demand for credit. Union Bank of India has raised 663 crores on Wednesday. PNB and Bank of Maharashtra are expected to raise the money on Thursday. Next is on M&M. M&M has concurred for itself in the leadership position in the country for the fast-growing utility vehicle, which segments revenue into the banking and the other group. It's a continuation of the because of the strong order book, which is followed by the new launches like Thar, XUV 700 and Scorpio. So this is a positive update. The Reserve Bank of India could take the key policy rate to 6.7% next year as the core inflation stays elevated and the US Federal Reserve continues to hike rates. This was updated by the Treasury head of the IDBI Bank on Wednesday. So the Indian Capital Market Regulator has fined Anil Ambani promoted Reliance Commercial Finance for violation of disclosure norms. The SEBI has informed this through a letters. They have received a letters nearly 4 letters and debentures from the debenture trustees of Vistara
ITCL providing information regarding various defaults by RCFL in the repayment of interest and principal amount to the debenture holders. Next is on Sulawite. So today there is a listing of Sulawite in the pre-market listing. The company has fixed the price band at 340 to 357 a share. And next is on Paytm. So the Paytm chief Vijay Shankar Sharma said there will be no more cash burn in the business. Uh, it has the Sharma said that the digital payment company is far ahead of resetting its ambition on controlling spending. Earlier in the November, the company has said it will become cash free, free cash flow positive in next 12 months. So it will be on a watch list. Next is on Kalpataru Power Transmission. The company of Wednesday said that the National Company Law Tribunal has approved the merger of GMC Project India Limited with the firm, making it one of the country's largest listed engineering and construction company. The combined entity will have a significant presence in the India and project in 67 countries with offerings in well diversified areas of power transmission and distribution, buildings and factories, waters, railways, oil and gas, and heavy civil infrastructure segment. Next is on Z Entertainment. Uh, Z 5 years 5 years after exiting the sports broadcast business, Z Entertainment Limited is set to come back with the International League T20, ILT T20, and IPL style cricket league floated by the Emirates Cricket Board. In May, Z signed a 10-year deal with ECB for IL T20 global media rights, TV and digital for a reported 100 million or over 800 crores. The new league makes for the perfect vehicle to re-enter the sports broadcasting. This was updated with the Rahul Suri, the president of C Business. It was said in an interview. Next is a Max Financial, Max Ventures Investment Holding, a promoter of the financial service firm Max Financial Service on side of Wednesday has offloaded 58.85 lakh shares in the company for 400 crores through an open market transaction. Next is on India Grid, Infrastructure Investment Trust Greaters and GR Infra Projects on Wednesday announced a strategic partnership to bid for identified power transmission project worth 5,000 crores. And MOU has been signed to jointly bid for identified tariff-based competitive bidding transmission project, aggregating to approximately 5,000 crore. Addition to comments, the partnership, India Grid and Grill have entered into framework agreement to acquire 100% stake in Rajkot Transmission Limited, which GRL has won in March. So this stock will be in a watch list. And then lastly, on the Lupin, the pharmaceutical company on Wednesday said it has received approval from the US health regulator for the generic version of tablets, which is used to control the parietal onset seizures. The approval by the US food regulator is for the different kinds of MG. So these are the generic equivalent of Preventic tablets. So the Lupin will be in a watch list. And coming to the markets, so we have seen that India VIX has now has spiked up. So yesterday, the India VIX was up by 12.94%, which was almost 15.56. There can be a little bit of more volatility. There are chances India VIX might spike to 16 to 17 odd levels. In that scenario, the volatility will be high. We have the markets which we are seeing. It's a corrective move of whatever we saw in the previous month's gain. So the lower side 18,000 is likely to act as a demand zone and 42,000 for the bank nifty. PSU banks, which already had rallied, as are now coming to the supports level. So we are having a positive view on the PSU banks. And yesterday there was a very volume spike in most of the
laboratories stocks like Thyrocare, Vijay Diagnostics, Glenmark Pharma, Metropolis, and Dr. Lal Path. So these were the stocks which have seen the volume spikes in yesterday's session. So we believe that this momentum will be seen in this counter for the next couple of days. Lastly, there are two counters, one from the pharmacists, Sun Pharma and Davis Lab. These are the two counters which are looking very strong on chart. So we can see some positive momentum in the stock for the next coming trading session. So that's all from my end, and hand over to Hitendra Form or Hindi updates. Thank you. थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं बंधन बैंक के साथ। बंधन बैंक को एक बाइंडिंग बिड मिला है 801 करोड़ का, बेसिकली एआरसी कंपनी से मिला है, और ये एआरसी है जो इनकी जो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो था 8,896 करोड़ का। और बैंक ने कहा कि ये से चैलेंज मैटर से अप्रूवल के लिए लेके जाएंगे, और इनको जो अप्रूवल इनकी बोर्ड से ऑलरेडी मिल चुका है। सो ये ग्रुप लोन सबाल का था और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है। सेकेंडली अडानी एंटरप्राइज से, अडानी एंटरप्राइज जो अडानी सोलार है, उन्होंने फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग की जो रिसर्च आर्म है, उन्होंने एक मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इनगोट है जो कि इनके मुंद्रा फास्टर ने डेवलप किया है। और ये जो मोनोक्रिस्टलाइन इनगोट्स है, ये बेसिकली ड्राइव करेंगे इनकी जो इंडियनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोड्यूस करेंगे रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, जो कि सिलिकॉन बेस्ड पीवी मॉड्यूल्स है, जो कि एफिशिएंसी है 21 से 24%। नेक्स्ट है स्टारलॉक पे। स्टारलॉक लॉजिस्टिक्स ने कहा कि उन्होंने कंप्लीट किया सेल 29.6% का, जो कि इनकी सब्सिडरी इंडिया पोर्ट लॉजिस्टिक्स का 16.5 करोड़ के लिए। बोलो लॉजिस्टिक्स जो कि बोलो लॉजिस्टिक्स जो कि बायर है इस स्टेक की, और जो शेयर होल्डिंग है स्टार स्पोर्ट्स की, जो इसमें रहेगी नील, और इंडिया पोर्ट लॉजिस्टिक्स की जो अभी है वो बंद हो जाएगी। नेक्स्ट जेबी केमिकल्स ने कहा कि जो उनकी प्राइवेट इक्विटी फर्म है केकेआर बैंक, और उन्होंने एक्वायर किया है रजल फ्रेंचाइजी जो कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल से है। इससे देखा जाए तो ग्लेनमार्क की जो कार्डिक ब्रांड रिजल्ट है वो अभी नेपाल में भी वो सेल कर सकते हैं 313 करोड़। भारत फोर्ज के लिए ये न्यूज है, कंपनी ने कमेंट्स की अपनी सप्लाई जो फोर्जिंग यूटिलाइजेशन ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और ये सप्लाई करेगा सरलोवा एडवांस मटेरियल से। ये एक पार्ट है कल्याणी ग्रुप का ही, और ये कंपनी के जो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए एक स्टेप लिया जा रहा है। एवेनॉन सिंथेटिक्स के लिए ये न्यूज है कि उन्हें एक सर्टिफिकेट मिला है रजिस्ट्रेशन का, जो कि एनबीएफआई के लिए मिला है, और ये बिना आरबीआई से जो एक्सेप्ट किया है इन्हें, आरबीआई से इन्हें जो एक्सेप्शन मिली है, और ये आगे जा सकते हैं। और एवेनॉन सिंथेटिक्स और एवेनॉन फाइनेंशियल्स के लिए। क्वालिटी फार्मा के लिए ये न्यूज है कि इन्हें एक अप्रूवल मिला है ब्राजील बेस्ड नेशनल हेल्थ सर्वेलेंस एजेंसी से, और बेसिकली इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनके जो अमृतसर और ऑन्कोलॉजी इंजेक्टेबल यूनिट के लिए हिमाचल प्रदेश में। और ये अप्रूवल अलाउ करेगा कंपनी को प्रोडक्ट करने के लिए ब्राजीलियन फार्मा में। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ये न्यूज है, रिलायंस रिटेल वेंचर जो इनकी सब्सिडी, इन्होंने मेट्रो कैश एंड कैरी का जो 100% स्टेक बाय कर लिया 2850 करोड़ के लिए, और ये क्लोजिंग बेस एडजस्टमेंट प्राइसेस है। बोरोसिल ने कहा कि उन्होंने ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट किया ओफेयर वेल ग्लास में, जो कि इनकी जयपुर की फैसिलिटी में है, और ये 42 टन पर डे के हिसाब से इसे मैन्युफैक्चर करेंगे। आइनॉक्स लेजर ने भी 2 नई मल्टीप्लेक्स ऐड किए हैं, और उन्होंने सीईओ ने कहा जो मर्जर रहेगा आइनॉक्स पीआर का वो अभी ट्रैक पे है, और आगे फर्दर जो हम देख रहे हैं अवतार की जो सेल्स है, उन्होंने देखा जाए तो 129 करोड़ उन्होंने जुटा दिए हैं एक पहले वीक में। और ये देख रहे हैं जो दशम के हिसाब से देखा जाए 200 करोड़ थे, और सर्कस की एडवांस बुकिंग देखी जाए तो 28,000 टिकट अभी तक इन्होंने बेच चुके हैं। तो हमेशा इन्हें लगता है कि जो Q3 रहेगा वो आइनॉक्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, तो करंटली हमारी भी इसके ऊपर ओवरऑल रेटिंग पॉजिटिव ही है आइनॉक्स और पीवीआर। स्टेनलेस स्टील के लिए एक न्यूज है कि महाराष्ट्र स्टेनलेस स्टील इसमें सबसे बेनिफिशियल रहेगी। एंटी डंपिंग ड्यूटी इसके ऊपर लगाई गई है, जो कि इम्पोर्ट आता है चाइना के लिए अगले 5 साल के लिए रहेगा। लेमन ट्री ने भी अनाउंस किया कि इनकी जो नई होटल है मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है, और ये लेमन ट्री की कार्नेशन ग्रुप इसे रन करेगी। सो इसके साथ देखा जाए तो उत्तराखंड में टोटल 8 प्रॉपर्टीज लेमन ट्री की रहेगी। टोरेंट ग्रुप ने जीत लिया है जो रिलायंस कैपिटल का जो है 8640 का करोड़ में उन्हें रिलायंस कैपिटल एक्वायर किया है, और ऑप्शन देखा जाए तो कल वेडनेसडे को हुआ गया था। पीएसबीज के लिए न्यूज है कि वो अपने फंड्स रेस कर रहे हैं, जो कि 81 बॉन्ड सेल कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले यूनियन बैंक ने रेस किया जो कि 663 करोड़ था, और पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र आज रेस करेंगे थर्सडे को।
महिंद्रा ने भी अपनी फुटप्रिंट है जो देखे पैर जमा लिए हैं एसयूवी सेगमेंट में, और ये देखा जाए रेवेन्यू टर्म्स में भी ये एकदम डोमिनेशन पोजीशन में है। जैसे इनकी जो न्यू लॉन्चेस है उसकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पे दिख रही है, जैसे थार एक्सवी 700 स्कॉर्पियो में। सो ओवरऑल एक पॉजिटिव न्यूज रहेगी महिंद्रा। आरबीआई ने कहा कि उनकी जो की पॉलिसी रेट्स है वो 6.75% तक नेक्स्ट ईयर तक लेके जाएंगे, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन दिख रहा है एलिवेटेड ही रहेगा। यूएस फेड भी कंटिन्यू कर सकता है रेट हाइक करने के लिए, ऐसा जो ट्रेजरी के हेड है आईडीबीआई बैंक में कहा गया है। हाँ, इंडिया कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर ने फाइन किया अनिल अंबानी की जो आरसीएफएल है, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, बेसिकली डिस्क्लोजर नॉर्म्स नहीं था, इसके चलते इन्हें फाइन किया गया है। और आरसीएफएल ने जो पहले भी बहुत सारे डिफॉल्ट्स किए गए हैं इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल को, जो कि डिबेंचर होल्डर्स के लिए है। आज नहीं लिस्टिंग एक आने वाली, 16 वाइनयार्ड्स की लिस्टिंग होने वाली है एनएससी बीएससी पे, और इसकी जगह देखा जाए तो सफिशिएंट 2.33 टाइम्स था और 960 करोड़ का ये आईपीओ था टोटल। पेटीएम के सीईओ ने कहा है कि अभी वो कैश बर्न नहीं करेंगे, उनका फोकस ये रहेगा कि कैश बर्न ना करके अभी वो डिजिटलाइजेशन और डिजिटल पेमेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, और इनकी जो एम्बिशन रहेगी वो कंट्रोल करने की जो स्पेंडिंग है ओवरऑल के लिए। और उनका एक ये कहना है कि वो एफसीएफ कैश फ्लो हो सकते हैं नेट पॉजिटिव की तरफ जाएंगे नेक्स्ट 12 से 18 महीने तक। कल्पतरु पावर ने भी कहा कि उन्होंने एक अप्रूवल मिल गया है जो उनकी जीएमसी प्रोजेक्ट्स है उसको मर्ज करने का। बेसिकली जीएमसी प्रोजेक्ट्स देखा जाए तो एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इंडिया और 67 कंट्रीज ओवरऑल में, और बेसिकली पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, वाटर, रेलवेज, ऑयल, गैस एंड हेवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में इनके फॉर किए गए हैं। जी एंटरटेन में कहा कि वो एक वापस आ सकते हैं जो उनका पहले 5 इयर्स पहले इन्होंने जो स्पोर्ट्स बिजनेस एग्जिट किया था, और वे अभी इंटरनेशनल IIT T20 के नाम से वे शायद कम बैक कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ भी साइन अप किया है $100 मिलियन के लिए, जो कि 800 करोड़ के आसपास आता है। ये न्यू लीग रहेगी, परफेक्ट एंट्री भी दे सकती है जी एंटरटेनमेंट के लिए, स्पोर्ट प्रॉस्पेरिटी बिजनेस के लिए। राहुल जोरी जी जो उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा। नेक्स्ट फाइनेंशियल वेंचर्स ने भी कहा कि इनकी जो प्रमोटर है उन्होंने कल अपने 58 लाख शेयर ऑफलोड किए गए 400 करोड़ के आसपास का, टोटली 1.7% स्टेक होता है। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट की ने कहा कि उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है जो कि पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए रहेगा 5,000 करोड़ के लिए, और जो जीआरआईएल ने भी कहा है कि वो फ्रेमवर्क में एंटर कर रहे हैं जिससे वो 100% स्टेक बाय आउट कर सकते हैं राजगढ़ ट्रांसमिशन के लिए, जो कि जीआरआईएल ने मार्च में जीती थी। लास्ट न्यूज ये है, यूरोपियन फार्मा ने कहा कि उन्हें अप्रूवल मिल गया है यूएस हेल्थ रेगुलेटर से इनकी जो जेनेरिक वर्जन है पिराफ सेरम टैबलेट्स के लिए। बेसिकली ये सीरियस के लिए यूज होती है और ये 10, 25, 75, 100 mg में मिलती है। सो इसका जेनेरिक वर्जन भी डेवलप करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द मॉर्निंग कॉल। यू मे नॉट डिस्कनेक्ट।